फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स मेसी। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक साइंस का बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। तो ये है हमारी साइंस की बुक का चैप्टर। ये साइंस की टेक्स्ट बुक है, आईसीएसई बुक, और ये क्लास 6 की है। वैसे तो ये सेंट जेवियर्स की बुक है, पर ये मोस्टली एवरी आईसीएसई सिलेबस में ये चैप्टर अवेलेबल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो देयर इज एन इंट्रोडक्शन. I'll start with the main things because I don't want to waste your time. So you can read if you can stop the video and read. So let's start with a physical change. Physical change is a temporary change in a body. So this line is highlighted in this book. So we'll write the highlighted line somewhere so that at the last it's easy to revise. I wrote those lines on my blackboard. And characteristics of physical change. Now physical change are reversible. For example, if we freeze in ice, we put a glass of water and we kept it in the freezer. The glass of water is kept it in the freezer, and after some time it will, when we'll take out of the fridge, it will be freezed. So if then it is a physical change, because if we keep that ice in the room temperature, again it will become water after some time as the ice melts. So this is called a physical change. So I should tell you more characteristics of physical change. During the physical change, there is no change in weight. Weight में no change. अगर आप ट्राई करोगे घर पे कि आप आइस लोगे, जो आपने उतने ही पानी, अगर आपने एक कप लिया फुल, आप फुल कप की आइस जमा दोगे, एक हाथ में आप आइस पकड़ के देखो, फिर आप कप में ही आइस रखो और उसे कप को पकड़ो, एक साइड आप रूम टेम्परेचर का वाटर लो और उसे पकड़ो एक कप में, सेम मेजरमेंट से. So there will be no change in weight, same changes will be there. Now second, no new substances formed during the physical change. Physical change में कोई new substance form नहीं होता, क्योंकि अगर आप वाटर की आइस जमाते हो तो आइस तो वाटर की होती है ना, कोई नई चीज की थोड़ी ना जमेगी. So let me give you more examples. Like water on heating changes to steam, and on condensing convert back to water. Thus the change is reversible. So if we boil in water, it will be boiled, and again if we keep that water out of the gas in a normal room temperature, again it will become normal water. So it is a physical change. Anytime it can be reversed and anytime it can't be reversed. So this was a physical change. Let's begin with the chemical change. Now the one more line is like first line of chemical change is underlined. Chemical change is a permanent change which involves change in properties and composition of substance. Now chemical change is a change like जिसमें अगर आप एक बार chemical change कर देते हो, तो अगर आपने जैसे वाटर की आइस जमाई थी पहले, तो वो आप रिवर्स भी कर सकते थे क्योंकि आपको वाटर थी. एंड इसमें अगर आप कोई भी चीज को केमिकल चेंज कर भी देते हो तो आप वापस उसे नहीं ला सकते उस चीज को, वो परमानेंट चेंज होता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज? लेट मी टेल यू. So number one characteristic of a chemical changes cannot be reversed easily. It can be reversed, but it's very difficult. Only in some things, only 1% we can, 1% or 2% chances is there for reversible change. Now second, there is an apparent change in weight. अगर आप देख रहे थे पहले कि आइस और वाटर का सेम चेंज था, अब आइस और वाटर का सेम चेंज था पहले, तो केमिकल चेंज में अगर ऐसी कोई भी चीज होगी उसका सेम चेंज नहीं होगा. वेट आई मीन उसका सेम वेट नहीं होगा, डिफरेंट वेट होगी. वेरी ड्रास्टिक चेंज विल बी देयर. Thirdly, new substances are formed during a chemical change. In our physical change, no new substance was formed. Only आपने water की आइस जमाई थी तो water ही था ना. In this, a new substance is formed. Fourthly, properties of new substance are formed are entirely different. पहले आप लोगों ने पहले तो मतलब वो न्यू सब्सटेंस तो था ही नहीं, पर फिर भी इसमें ड्रास्टिक चेंज बहुत आता है इसमें. और एकदम एक एक पार्ट उसका मतलब
अलग होता है पुरानी चीज। So next, fifth, last, a lot of heat energy is given out or absorbed during chemical change. अगर आपको कोई chemical change करना है तो उसमें heat energy बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो होएगा नहीं। और तो heat energy is compulsory for chemical change. Now there are so many examples like rusting of iron, curdling of milk, boiling of potatoes, germination of seeds. So there are so many examples. I should give you only one or two main examples. So one example you can easily understand is curdling of milk. Milk changes to curd on addition of lactobacillus. So this is an important word. So देखिए, आप अगर मिल्क को चेंज करते हो कर्ड में तो लैक्टोबैसिलस होता है कोई खट्टी चीज लाइक लेमन, और अगर आपको कर्ड जमाना है तो आपको मतलब लेमन नहीं चाहिए पर कर्ड जमाना है तो वो होती है कि लैक्टोबैसिलस। सो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी जल्दी। तो आगे हम लोग एग्जांपल में आपको बताती हूँ। दिस कर्ड formed as an entirely different properties and cannot be converted back to milk. Once if you change milk to curd, you cannot again reverse it. Like I told you that what like I told you that a lot of heat energy is given out or absorbed during a chemical change, and chemical changes cannot be reversed easily. It can't be reversed. Like if we change milk into curd, so again after it cannot be changed curd to milk. No, it cannot be reversed. And a lot of heat energy is needed. So on the gas flame we'll put, and then we'll put that lactobacillus, and then we can change milk to curd, but not curd to milk. Now, secondly, I should tell you boiling of potatoes. When we boil potatoes, the potatoes soften and properties change. The non-edible potatoes can be converted into edible potatoes. Thus, the property change which cannot be reversed. Now, if we boil a potato, it gets soften something. तो जब वो soften हो जाते हैं, अगर आप उसे फिर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखते हो, तब भी आप सोचोगे थोड़े हार्ड हो जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा उसमें। वो एकदम वैसी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं हो सकती, पर जैसे मैंने आपको बताया था 1 और 2 चांसेस हो सकते हैं, पर दैट ऑल्सो उसमें भी सेम वैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कभी भी किसी चीज में। So that was my today's video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And if you want these chapters, physical and chemical change, question answers and book exercises of this chapter, please comment and tell me if you want. These question answers are very easy and very helpful. Now there again in question answers, and there is summary also. 5 new main points include this: physical changes that temporarily change in a body. This also includes, because this was the main line, first main line. So all this and difference between physical and chemical changes. So today was this only. I am ending with this video now only. So let me meet me in a next video. So by the time, bye bye.